I'm your servant. You have to tell me. You can take sugar. Okay. Bhagavad Gita, chapter 10 and sloka number 10. Esam satata yukta nam vajatam pridipobakam dadami puri yukam tam yena mamupayantite. Bhagavad Gita, अध्याय 2 धरामि बुद्धि योगम तब येन मामुपयान्ति. So the translation is, to those who are constantly devoted unto serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. इसका अर्थ है कि जो नियमित रूप से मेरे चिंतन में लगे हुए हैं, मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सके. In this verse, the word Buddhi Yoga is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. तो यहाँ पर बुद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बुद्धि योग के बारे में बताया था. सब कुछ बताने के बाद वो यहाँ पर फिर से बुद्धि योग के बारे में विशेष रूप से बता रहे हैं. Now Buddhi Yoga is explained. बुद्धि योग के बारे में बताया गया है. Buddhi Yoga in itself is action in Krishna consciousness, that is the highest intelligence. बुद्धि योग वास्तव में कृष्ण भावनामृत है, जो कि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. तो बुद्धि का अर्थ है इंटेलिजेंस और योगा का अर्थ है सिद्धि. When one tries to go back home, back to God, and takes fully to Krishna conscious and devotional services, action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is a process by which one gets out of the entanglement of this material world. जब कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत की पद्धति को लेता है, तो इसे बुद्धि योग कहते हैं. बुद्धि योग भौतिक जगत से बाहर जाने की पद्धति है. The ultimate goal of process is people do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. तो ये इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण है, जो कि भक्तों के संग और संग के माध्यम से लाभ होता है. One should know that Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. तो जब हमें पता चल जाता है कि लक्ष्य कृष्ण है, तो धीरे-धीरे क्रमशः हम उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं भक्तों की संगति माध्यम से. So I'm very pleased that all of you have come. All of you have shown interest to come to this program tonight. तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबकी बहुत रुचि है कि आप इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए. This is a very big city with millions of people. तो ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं. But very few of us have assembled here today. लेकिन आज बहुत कम लोग यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं. So why is that? ऐसा क्यों है? Because everyone who has come here is having an interest what is called Buddhi Yoga here. तो जो भी यहाँ आए जरूर उनकी रुचि है इस बुद्धि योग में. Like some days back, 2 days back, I was in Dwarka, Delhi. तो 2 दिन पहले मैं द्वारका में था, दिल्ली. So they asked me to say something about the chanting. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा जप के बारे में कुछ बताइए. So I said, you imagine you're in the Middle East or in Rajasthan. There's a big desert. तो मैंने बताया कि आप सोचिए कि आप राजस्थान के मध्य में एक जो रेगिस्तान है, आप वहाँ पर हैं. Kutch, Ran, what is that name for desert? Kutch. So you have a lot of sand. और वहाँ पे बहुत रेती है. And as human beings, we can do nothing with sand. और अगर मनुष्य हम रेती से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं. So if we are standing in an ocean of sand, we immediately have to make an endeavor to find a place where there is water. इस तरह रेती के समुद्र के बीच में है, तो हमें तुरंत वहाँ से निकल के पानी की तलाश करनी होगी. So it speaks here of mystical. Some places in the middle of the desert, there's water coming from the underground, and it's called an oasis. तो कहीं-कहीं
रेगिस्तान में भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी आता है, इस स्थान को ओएसिस बोलते हैं। So this is where the travelers are going and they quench their thirst. तो जब भी राहगीर जाते हैं तो उस स्थान से वो अपनी प्यास बुझाते हैं। So even the city looks very elevated and it doesn't look externally like a desert. तो इस तरह शहरों में भी ये रेगिस्तान की तरह है, और but in reality the city is an ocean of sense enjoyment and the city is an ocean of ignorance. तो वास्तव में ये जो शहर है ये इंद्रिय तृप्ति और अज्ञान का समुद्र है। We are thinking we're very elevated because we have a smartphone, we have LED lights, we have electric cars, we have televisions, computers, we have everything as a click of a button. Now you don't even need to press a button, you just say Alexa, do it, and it will happen. तो हम सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, एलईडी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ भी हम बटन दबा के बहुत सारे काम कर सकते हैं। Now you don't need to press the button, you only say light on. आजकल तो आपको बटन दबाने की आवश्यकता नहीं, आपको बस बोलना पड़ेगा, बिजली आ जाए। But here Krishna speaks about buddhi yoga, he speaks about intelligence. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि के बारे में। So here we in this oasis because here we have Sri Radha Govinda. तो ये जो स्थान है ये इस तरह रेगिस्तान के बीच में ओएसिस है, ओएसिस की तरह है, यहाँ पर राधा गोविंद है। And here we have the Srimad Bhagavad Gita. और यहाँ पर हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता। So here we have the Lord and here we have the song of the Lord. तो यहाँ पर हमारे पास भगवान है और यहाँ पर भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। So now all of us have assembled here because we have this intelligence and instead of being at home in front of the television or drinking or smoking or whatever people do in other places, we have come here and assembled in front of the Lord. तो हम आज यहाँ पर बुद्धियों के द्वारा है, हम चाहे तो घर पर हो सकते हैं, टीवी के सामने बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राधा गोविंद भगवान के सामने। So many of you maybe just not deeply understanding, but actually all of us who are sitting here today are very, very fortunate. तो आप इतना नहीं सोच पा रहे होंगे, लेकिन हम सब आज यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। Srila Prabhupada said here in part of the purpose that we have set our goal, our aim. तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। Basically, there's two varieties of people. One variety they're looking away from the Lord, and another variety of jivas they're looking towards the Lord. तो दो प्रकार की श्रेणी के जीव होते हैं, एक भी जो भगवान की तरफ उन्मुख है और दूसरे जो भगवान से विमुख है। Maybe we're feeling we're very unqualified and to attain the Lord is very far away from us. हो सकता है कि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अयोग्य हैं और भगवान को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन है। But here, the Lord in the sloka is saying very merciful that if you do a little bit service, if you render love to myself, then I will give you the knowledge how you can come to me. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप प्रयास करते हैं मेरी तरफ आगे बढ़ने का है, तो मैं आपको बुद्धि देता हूँ कि कैसे मेरे पास आना है। So all of you have come here and you're very fortunate. Now, if I have something very valuable, then I have to be very careful with it. तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली यहाँ आए हैं और आपको बहुत कीमती चीज अगर मिल रही है तो बहुत सावधानी से लेना। So we have to value our chance of the piety of being in contact, being in front of the Lord, being in contact with Srila Prabhupada and the devotees, and we have to take this goal, and then the Lord will carry us towards the goal. That's what He's promising in this sloka. तो ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इस तरह भगवान के सामने एकत्रित होने की श्रील प्रभुपाद और भक्तों की कृपा से, और तो हमें इस गोल को लेना है, ग्रहण करना है और इस पे आगे का प्रयास करना है। So we have to take it serious, and that means we have to develop some sadhana. तो हमें इसे गंभीरता से लेना है
और हमें कुछ साधना करनी है उसे प्राप्त करने की। Sadhana means a process to achieve the goal. साधना मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि। So we have do's and we have don'ts. तो हमें कुछ उसके लिए करना है और कुछ नहीं करना है। Obviously, we don't want to injure other living entities. Hare Krishna. Yes. We don't want to injure other living entities. You have to make it work. Give it a magic touch. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So don't eat other living entities. तो बाकी जीवों की तरह मत खाओ, Don't intoxicate. नशा मत करो, Don't gamble. जुआ भी मत खेलो, Don't have illicit relationships. और अवैध संबंध मत रखो। And as a positive, come and see the Lord, chant Hare Krishna, go to the program, render devotional service. और जो करना है हमें मंदिर में जाइए, भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, भक्ति करें। And offer your food, do naivedya. और जो कुछ हम करते हैं उसे भगवान पर दो। If we do all that, then slowly but surely our consciousness will develop Buddhi Yoga. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे लेकिन surely वास्तव में हमारी चेतना धीरे-धीरे भगवान की तरफ विकसित होती है। So some people are thinking that we are giving up something. कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, But in reality, we are very happy people. When we engage in Krishna consciousness, there is no anxiety. And it says right in the beginning of the Bhagavad Gita, a little bit progress on this part relieves you from the worst fear. तो वास्तव में हम बहुत खुश आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इस भगवद गीता में बताया कि अगर कोई भक्ति का ग्रहण करता है तो वो हमारी चिंता और सबसे बड़े भय से हमारी मुक्ति करती है। What is that greatest fear? वो सबसे बड़ा भय क्या है? It is the fear that we're going to die. और ये फियर है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। As devotees, we don't fear. We are worshipping the Lord now. We're worshipping the Lord in the next life, and wherever we go, we worship the Lord. We're with the Lord, and we're knowing that we're going back to Vaikuntha, the place without anxiety. तो अभी हम जब भक्त बन गए तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम इस जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे, अगले जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे और धीरे-धीरे हम भगवान के धाम जाएंगे वहाँ। So I'm pretty tired. We had a very long day. We arrived here a little bit late. So I'm very happy that all of you are here. And I would very much appreciate if we could have 5-10 minutes question answers. That you will give a question and I will try to answer. तो आज का मेरा दिन बहुत व्यस्त था, मैं बहुत टायर्ड हूँ और अभी भी मैं कुछ समय देता हूँ। अगर किसी भक्तों को कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ प्रश्नों का उत्तर करने में। किसी का कोई प्रश्न है? Yes. What? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे लिए स्पेशली भक्तों के लिए मृत्यु ज़्यादा बड़ा डर है या मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेना ज़्यादा बड़ा डर है? हरे कृष्ण। For us as a what is more fearful us, death or taking next birth?
Typically, when anybody gets born, what will happen? He has to die. अगर किसी का भी जन्म होता है तो उसकी मृत्यु होनी ही। So, in the moment we enter in this material world, we are getting covered, and the first covering is ahankara. जन्म होता है तो उसी समय हमारी चेतना आच्छादित होती है। In English we call that false ego. तो इस तरह कवरिंग की जो पहली कवर है, जो सतह है, उसको फॉल्स ईगो अहंकार कहते हैं। False ego means you falsely identifying with this body. तो मिथ्या रूप से हम अपने आप की अपनी तुलना शरीर से करते हैं। I'll give you an example. मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। For 10 years we were going this Padyatra all over India. तो 10 साल में इस तरह पद यात्रा में अलग-अलग जगह भ्रमण किया। So sometimes there are longer stretches and we have to stop in a particular village every round. तो इस तरह चक्कर में हमें अलग-अलग गांव में रुकना पड़ता था। So somewhere in Andhra Pradesh there was a big distance between villages, towns, and there was one small village next to the highway. So we stopped there one year. तो कभी-कभी दो गांवों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती थी, तो हाईवे में एक छोटा गांव आता था, वहां हम रुक जाते थे। So there were a lot of wild pigs there. और बहुत सारे जंगली सुअर वहां रहते थे। And it's normal in India, not a big deal. And one of those pigs must have gotten under the truck, so his back was broken. तो एक सुअर था, वो ट्रक के नीचे आ गया था, उसकी पीठ टूटी हुई थी। So he was dragging on two legs. तो वो दो पैर में घसीट रहा था अपने आप को। So we were all feeling some compassion for that pig. तो उसको देख के हमें बहुत दया आ रही थी। And next day we left, we walked all around India. After 3-4 years, we come back to the same place. तो इस तरह 3-4 साल भ्रमण करने के बाद फिर से हम उसी स्थान पर आए 3-4 साल बाद। And believe it or not, that same pig was still dragging around on two legs. तो वो सुअर को उस समय भी हमने देखा, वो दो पैरों पे अभी भी अपने आप को घसीट करके जी रहा था। Why in the world he would do that? तो ये इस तरह वो प्रयास करके इस तरह कर रहा था। An ocean of suffering. इस तरह वो दुख के समुद्र में था। Anytime there is food, that poor fellow is at the very last. तो उसको खाना भी मिल रहा था उसके बीच में। No female male association, nothing, just suffering from morning to evening. तो सुबह से शाम तक उसे दुख कष्ट था, कोई स्त्री संग भी नहीं मिल रहा था। But he is so much convinced that I am this pig, and if I have to give up this body, then I will suffer more than in this situation. तो सुअर के रूप में भी उसको ऐसा अनुभव था कि ये सुअर की तरह मुझे जीवित रहना है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे और कष्ट मिलेगा। So our consciousness travels with us from this life into the next life. तो हमारी चेतना हमारे साथ यात्रा करती है इस जीवन से अगले जीवन तक। So if you do a lot of sinful activities, then definitely you have to fear death. तो अगर आप बहुत पापपूर्ण कृत्य करेंगे तो जरूर है आपको इसके लिए भय होगा। Because first you get a little bit punishment in the hellish planet. तो नरक में थोड़ी उसके लिए सजा मिलेगी। And then you take birth in this world in a lower species, and again you have to suffer more than this life. तो फिर आपको इस शरीर में जन्म मिलेगा, किसी पशु के शरीर में जन्म मिलेगा और फिर से कष्ट होंगे। So this process, this Buddhi Yoga, this Krishna consciousness, the first lesson is you are not this body. तो कृष्ण भावनामृत का जो पहला पाठ हम सीखते हैं हमारे जीवन में वो है कि हम ये शरीर नहीं है। And as you make progress, you can actually feel your soul. You can get a glimpse that the person you are is actually not this body, that the person is inside with that consciousness of the soul. तो धीरे-धीरे जैसे आप भक्ति में प्रगति करते हैं, आप इसका अनुभव कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन मैं वास्तव में शरीर के अंदर हूँ, आत्मा है। So once you find your real consciousness, what you worry, you die, because you already know who you are. तो जैसे आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं,
फिर आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि आप जिए या मरे। Even if you're not pure enough to go back to Krishna, we'll take birth. It says there, where does a fallen yogi go? And he's giving two examples. You get a nice chance in your next life in the devotee family to final life. तो अगर पूरी तरह से आप भक्ति नहीं भी कर पाए, फिर से अगर आपका जन्म होता है तो भगवत गीता में 2 उदाहरण है कि या तो आपको एक योगी की तरह जन्म होगा या किसी रॉयल फैमिली। But this world is a terrible place, there's no doubt. लेकिन ये जो जगत है बहुत दुखमय है, इसमें कोई संशय नहीं। First you come as a baby, whack, you get a little whacked and you pass through that urine and you know nothing. When you come here, you know nothing. तो इस तरह जैसे ही जन्म होता है हम रोना शुरू करते हैं, डिस्टोर पास करते हैं और दिन भर यही हमारा जीवन होता है। Now you're sitting here, we have some knowledge, we have a wife, we have kids, we have a situation, we have money, we have everything. But any minute, and again we get pulled out from here, and again we get thrown in a new situation. तो अभी आप बड़े हो गए हैं, आपको ज्ञान हो गया है, पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, धन है आपके पास, लेकिन किसी भी क्षण आपको इस स्थिति से उठा के ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है कि आप बहुत भयावह परिस्थिति में हो जाएंगे। There's something you call burning that renunciation, some sort of vairagya. When you go to the burning gut and you see a fellow friend turning into ashes. तो इस तरह होता है कि कभी आप शमशान में जाते हैं, उस समय आपको शमशान वैराग्य आता है, उस समय देखने से। That moment you're shocked. उस समय हमें झटका लगता है। You realize what is this world? और हम सोचते हैं कि क्या ये दुनिया क्या है? But then when you come out and you see a beautiful girl or you have a pani puri or something, then immediately you forget. और जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं, सुंदर स्त्री देखते हैं, पानी पूरी देखते हैं, सब भूल जाते हैं। The feast is coming after this. और इस तरह फिर फेस्ट भी आने वाले हैं इसके बाद। So it is a situation. So as a devotee in Buddhi Yoga, we don't fear. Why would you fear? तो बुद्धि योग की तरह हम भागते हैं, हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। Is there, Radha Govinda is there. They will take care. Just one ritual spoken. If you give a little bit love, the Lord will take care how you can come to Him. तो गोविंद यहाँ पर है और आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। Alright? किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna Guruji, मेरा क्वेश्चन है, what is life and how to better and better this life? Okay, life is a very short episode in a very long movie. हरे कृष्णा, तो इनका प्रश्न है कि जीवन क्या है, कैसे इसको अच्छा करें? तो प्रभु जी का आंसर है कि जीवन एक छोटा सा एपिसोड है, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवी है। So many lifetimes you have come and gone and come and gone. बहुत सारे जीवन थे जिसमें आप आए गए। So that is life. And how to better in life is you develop the consciousness that I do not want to take birth again and again and again and again. तो कैसे जीवन को अच्छा करेंगे? तो हमें इस तरह चेतना विकसित करनी होगी कि अब मैं इस तरह बार-बार जन्म नहीं लूंगा। This time you want to be a nice devotee of the Lord. इस समय भगवान का एक अच्छा भक्त बनना है। Why not finally, the Prabhupada says, give this one lifetime, after so many lifetimes, please offer this one lifetime to Krishna. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे जीवन हैं, उनमें से एक जीवन भगवान कृष्ण को हमें अर्पण करना है। So how to become better and better? By chanting Hare Krishna, by eating Krishna prasada, and by rendering Krishna service. तो कैसे हम जीवन को अच्छा करेंगे? भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग करें और भगवत सेवा करें। There are 4 different yugas. 4 अलग-अलग युग थे। So first yuga there's meditation is a process. Second yuga there is yajna is a process. Third yuga
then comes deity worship is a process. In this Kali Yuga, the process is chanting, Nam Jap. तो एक युग में तपस्या करना विधि थी, दूसरे युग में यज्ञ करना, एक युग में भगवान का विग्रह सेवा करना विधि थी। लेकिन कलियुग में जो भगवान के नाम का जप करना, ये युग धर्म है। No any facility is needed. कोई ज्यादा सुविधा की आवश्यकता नहीं। Whatever work you're doing, while you're working, you can chant. Whenever you have free time, you can chant. Whenever you're with others, you can chant. Nothing will stop you. It is a relatively simple process. Keep your life pure and chant Hare Krishna. तो ये बहुत सरल है, आप कार्य कर रहे हैं, करते करते जप करिए, आप समय फ्री है, फ्री समय में जप करिए, हमेशा जप कर सकते हैं। तो केवल अपना जीवन, शुद्ध जीवन जिए और भगवान के नाम का जप करिए। And in that process, you will become. और इस विधि के द्वारा आप बहुत खुश हो जाएंगे। I come next year and check on you. तो मैं अगले साल आऊंगा और आपसे पूछूंगा। Anyone else? Hare Krishna, Prabhuji, thank you very much for that short though very enlightening class. Prabhuji, my question is, since you are from cow ministry, so this is due to the curiosity I have. Cow protection these days, Prabhuji, in India when we are talking about, especially a lot of research and the Indian farming, they talk about the indigenous breeds of cow. Okay. And maybe back 50 years back, this was not a big problem of this crossbreeding and the foreign breeds. So probably Prabhupada did not write, a lot about it or anything about it. So I wanted to know from ISKCON perspective in modern days, since you are directly coming from the ministry, how do we look? Are we taking it to the indigenous breeds? I got it. Yeah. Okay. Thank you. So, अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि भारत में जनरली, क्योंकि प्रभु जी डायरेक्टली काउ प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री हैं, तो अभी जिस गाय की हम बात करते हैं रिसर्च की वजह से, और भारत में जिस गाय की रक्षा की बात की जा रही है, वो प्रायः हम देसी गाय की बात करते हैं। और 50 वर्ष पहले, 60 साल पहले, क्योंकि देसी गाय और विदेशी गाय और जर्सी इसका बहुत प्रॉब्लम नहीं था, तो प्रॉब्लम प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा उस बारे में कहीं लिखा नहीं है। तो आज का ISKCON का क्या पर्सपेक्टिव है गोरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, कि जो गाय को हम बचा रहे हैं वो देसी गाय है या विदेशी गाय? So, it's the same than you. क्या तुम आप ऐसे देखते हैं क्या? मैं भी वैसे ही देखता हूँ। No, Prabhu. No, but I'm also human. Yes. लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ। That answer your question. Yes, Prabhuji, that, but still, Prabhuji, the problem remains. The animal species have been Latin names. So the Latin name, the species name for cow is Bos. You have Bos indicus and you have Bos taurus. Yeah. Bos indicus are the Indian cows and Bos taurus are the foreign cows, and then we have one more Bos, these are the yaks in Nepal. So all three varieties are cows. Yes. So if anyone tells you that the Western cows are not cows, that is from scientific view a mistake. So any animal species you can crossbreed and reproduce, they are one species. You can take a dog from Alaska and bring him here, you can crossbreed him. So now, there's a problem. When I come to India, my body is grown up in a cold climate. My skin is white, I get a sunburn. I'm not meant for this climate, so I'm suffering. I can't tolerate chili, so I'm not very well performing here. Yes, yes. So, but I can work harder than most Indians. Yes, yes. So you would think, hey, let's bring the Germans to India. But then we will suffer from the heat, we will suffer from dysentery, we will not fit well here. So then they originally thought the idea, they called that the white revolution. Some not so intelligent person was thinking, hey, the cows in the West give more milk than in India.
They forgot that there is a cool climate, green grass in abundance, lot of rain. They forgot the climate. They brought the cow from the west, was Taurus, into India, so it was not working. Then they had to put AC stables. They needed AC. They couldn't survive. Yeah. So then they realized that this is very costly. Sorry. Speaks English. तो लोरी का प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, गाय, देसी गाय या जर्सी गाय, इस तरह। तो लोरी का आंसर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो होता है कि इस तरह जो क्रॉस ब्रीड होती है, फिर भी गाय तो गाय रहती है। जिस तरह हम अलास्का से कोई कुत्ता लेके आएंगे, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता रहता है। जब फॉरेन कोई विदेशी व्यक्ति है भारत में आके रहता है, तो भारत की जलवायु उसको सूट नहीं करती है। यहाँ उसको, वो अगर ठंडे रीजन से आया है तो यहाँ उसको गर्मी लगेगी वो, तो उसको रहने के लिए एसी चाहिए या अलग अलग स्थिति होती है। फिर भी वो रह सकता है, वो बहुत काम भी कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आके और ज्यादा कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी वो एक मनुष्य ही है। तो इसी तरह बता रहे कि कुछ लोग वहां से विदेश से गाय भारत में लेके आए, क्योंकि वो विदेश में जब गाय थी वहां बहुत दूध दे रही थी, बहुत अच्छे से, लेकिन जब भारत में लेके आए तो उस यहाँ की जलवायु सहन नहीं कर पाए, तो उसको एसी में रखना पड़ रहा है, तो बहुत कठिन था। तो इसी स्थिति में क्रॉस ब्रीड्स हुआ। Yeah, the next step is then that they come for the crossbreeding. So the crossbreeds are okay because they give more milk and they're still adopt somewhat to India, but still they have, I'm working with cows, they have a lot of diseases, constant diseases. तो इस तरह जब क्रॉस ब्रीड होता है, वर्ण संकर होता है, तो उसकी कुछ स्थिति वो भी होती है, कुछ बीमारियां भी आती है उसके कारण, उसके कुछ गलत प्रभाव भी होते हैं। So you always have some people who will think that my country is the best, my cows are the best, my cows are the real cows, my country is the only real country, and everything else is one step down. तो इस तरह कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरा देश बहुत महान है और मेरे देश के जो गाय है वो बहुत महान है, और जो दूसरे हैं वो थोड़े एक पायदा नीचे में। I have heard people calling the western cows glorified pigs. तो कुछ लोग इस तरह बोलते हैं विदेशी की जो गाय है वो सुअर के समान है। But that's not how it works. लेकिन ये हमारा उस तरह स्वभाव है। It is post indicus and it is post taurus. A cow is a cow. तो ये साइंटिफिक उसके वैज्ञानिक कुछ नाम है। तो they're beautiful Swiss brown. They almost look like a gear guy. तो एक ब्यूटीफुल स्विस गाय है जो गियर गाय की तरह दिखती है। There's no difference. If somebody is preaching you that, I think he's a little bit too nationalistic. तो अगर इस तरह कोई सोचता है तो थोड़ा ज़्यादा राष्ट्रवादी। Then some people will say the milk from Indian cows is better and this and that. You can turn it and twist it and find loopholes in the system. I'm a human, you, foreign dogs, Indian dogs, foreign cows, Indian cows, cow is cow, humans are humans, dogs are dogs. I think it is not so important to spend too much time in it. It is good. If you want to have cows, it is good to have a local breed. It's good to have a pure breed animals because they are meant for this climate. They will not get sick. They give you nice milk and they look very beautiful as well. तो वास्तव में सही है कि किसी भी जगह अगर रहना है तो वहाँ की जो लोकल गाय हैं जो उस वातावरण जलवायु को सूट करके उसे रखना श्रेष्ठ है, उसी का दूध देना चाहिए। फिर भी जो इस तरह का जो मानसिकता है कि ये विदेशी है, ये वो है, यहाँ के यहाँ है, तो हर जगह का कुछ न कुछ गुण है, कुछ दोष है, तो वो हर जगह रहेंगे। In India, there's also 60, 70 different breeds from small, tiny dwarf cows to very skinny ones to very big ones with big horns. So many different varieties are there. तो भारत में भी बहुत अलग-अलग प्रजाति की 60-70 प्रजाति की गायें हैं, बहुत छोटी नाटी गाय से बहुत बड़ी-बड़ी। So cows are cows. That answer your question, or you want a more specific answer? No, thank you very much. तो ये गाय मतलब गाय है। Thanks, sir.
Hare Krishna Prabhu. My question is related to soul consciousness in this material world. Basically, according to medical sciences, there is no existence of soul because we have millions of our body, cells, tissues, and to maintain this, we have to get energy from the outside. So there is a particular energy conversion, and according to Newton's law, energy can neither be created nor be destroyed. It has to be transferred from one form to another form. My question is, in this soul consciousness versus body, in this material world, how does this energy comes? From where this energy comes? Because energy has to be some atom or molecule, as explained by the Einstein's law. Okay. Keep the microphone listening for 1 second. Can a computer be a living being? Can a computer realize itself? No, computer is not a living. It's actually. It is not. You said that. It's not a living. But it is run by. Okay. Now. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो सोल का चेतना है वो कहाँ से आता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे टिश्यूज हैं, अलग अलग ऊर्जा हैं, सेल्स हैं, तो उनको सबको एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो शरीर को इस तरह अलग अलग जगह से ऊर्जा आती है और अलग अलग वैज्ञानिकों का नियम है कि ऊर्जा को बना नहीं सकती है कि ट्रांसफर होती है। तो शरीर में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो प्रभु जी का So in our brain, the brain cells. Yes? Okay. The brain cells. My question is everything. You follow my thought. The brain cells. They have little synapses, and there's a little bit electric charge from one brain cell to another. Yes. So is that also some type of a machine? Is that some type of a biologic machine which works with electric charges? Yeah, neuromuscular thing. Yes, so thank you. Does the computer work with electric charges? So, how you can be a person? Because technically, you're just a machine. So the point I'm bringing here, you're just a biological machine which works with electric charges. The computer works with electric charges. What is the difference between your brain and a computer? There's no difference. It's a machine and it's a machine. The conscious is separate from this body and is separate from this machine. It's separate. Without the soul, you're dead. If I die right now, what is the difference? Nothing has been gone from this body. You're asking, what is gone? Nothing is gone. You wake me now, and I die on a heart attack, and you wake me again. There's not one atom is missing. I'm still here. No energy is gone. But what is gone? The consciousness is gone. And the consciousness is within this body, it sits in the heart as a soul. It is tiny, it is very tiny. It's a 10,000th part of a tip of the hair. Sorry, I forget words. When they speak English, I get English. तो जो प्रश्न था आत्मा के अस्तित्व के बारे में, तो जो बताया कि जिस तरह कंप्यूटर है चार्ज से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, वो मशीन है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर भी न्यूरॉन से अलग अलग सेल से इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ब्रेन मशीन की तरह कार्य कर रहा है, सेम है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर चेतना है जिसके कारण पूरा शरीर चलायमान है। और जब कोई मृत्यु हो जाती है तो अगर मशीन होती है खराब हो जाती है तो हम उसको सुधारने की फिर से चालू हो जाएगी। कोई भी मशीन खराब होगी उसको सुधार सकते हैं, फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन जब अगर शरीर भी मशीन है तो मृत्यु के बाद फिर से उसको चालू कर लेना चाहिए, रिपेयर कर लेना चाहिए, फिर उसको वापस तो नहीं कर ले पाते। Okay, your turn. I could understand a little bit. What you mean to say is in our body, the soul is running the body. Yes. Soul is running the body. Yes. Yes. So whenever the soul goes away from the body, then the person is. Yes. Yes. But the point I'm making is the consciousness in this body
does not come from the brain. The consciousness or in this body comes from the soul. The soul occupies the body gets consciousness. When the soul leaves the body, the consciousness leaves with the soul. One thing in Harvard University, actually this point has been debated, it has been enthusiastically discussed, but I don't know why the Harvard University scientists, still medical scientists, still they are not able to recognize such type of supreme consciousness which is existing in our. Okay, Srila Prabhupada gives a simple example. Let's say we have a well. तो प्रभु ने बताया कि जो चेतना है शरीर में वो ब्रेन से नहीं आ रही, मस्तिष्क से नहीं आ रही, वो आत्मा से आ रही है। आत्मा के कारण हमारा पूरा शरीर चैतन्य है। Let's say we have a well, कुआं। तो अगर हमारे पास एक कुआं है, inside is one frog. उसके अंदर एक मेंढक है। So he is very happily living there. तो वो बहुत खुश रहता है कुएं के अंदर रह के। So one other frog is coming from the ocean. तो एक दूसरा मेंढक आता है उसमें एक समुद्र से। Chup 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 chup. He jumps into the well. तो वो भी आगे कुएं में कूद जाता है। And he tells the frog in the well about the ocean. और वो कुएं वाली मेंढक को समुद्र के बारे में बताती है। So the frog will say, "Oh, how big is it? 10 times as the well?" तो कुएं की मेंढक बोलती है कि समुद्र कितना बड़ा है, इस कुएं से 10 गुना बड़ा है, कितना बड़ा है? No, 100 times, 1000 times, 10,000 times. तो वो 100 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा, कितना बड़ा है? Unless the frog wants to come out from his well consciousness, he cannot understand. तो जब तक ये कुएं वाली मेंढक कुएं की चेतना से बाहर नहीं आएगी, वो समुद्र नहीं समझ पाएगी। If you really think how complicated this human body is, how intricate the hormones are working, how amazing this machine is. तो अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे कि कितना जो मनुष्य शरीर है कितनी आश्चर्यजनक है, किस तरह कार्य कर रही है, किस तरह सूक्ष्म अलग-अलग इसमें तंत्रिकाएं हैं। As long as people are thinking this has happened by chance, they're sitting in that little well. जब तक लोग ये सोचेंगे कि शरीर इसी तरह चल रहा है, बाय चांस चल रहा है, मतलब ये कुएं के मेंढक के समान, they will not come out, and that's why they cannot see how the consciousness is different from matter. तो इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकते, वो समझ नहीं पाते कि किस तरह जो चेतना है वो जड़ पदार्थ से अलग है, वो स्पिरिचुअल। In Russia, in the Soviet times, they were doing experiments with all sorts of things. तो इसी तरह रशिया में एक बार वो बहुत प्रयोग कर रहे थे इसके बारे में। So they were very interested in telepathy. टेलीपैथी में बहुत महत्वपूर्ण है। So that means I will sing something, a number between 1 and 10, and I will focus on you, and then we will make experiments. How many times the improvement is there? How many times I'm managing to convince you of the number, and you will say the same number. तो इस तरह वो चिंतन करते हैं कि एक व्यक्ति अपने दिमाग में 1 से 10 के बीच में कोई नंबर सोच रहा था और दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो फोकस कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति उसी बीच में गेस कर रहा था कि वो कौन सा नंबर है जो उसने सिलेक्ट किया है। So compared to random numbers, they found out that this is actually working quite a degree. तो इस तरह बहुत बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उनको पता चला कि कुछ काम करता है। So then there was wondering, let us put some ball in between. फिर उन्होंने और नंबर बढ़ाए बीच में, But it also worked to the wall. तो उसमें भी वो काम कर रहा था। Then they put 5 feet lead in between. Lead metal. तो उन दोनों के बीच में और भी उन्होंने कुछ इस तरह, And it was still working. फिर भी वो कार्य कर रहे थे। And then they got scared and stopped it. तो वो फिर डरे और उन्होंने उसको रोक दिया। Because that was an energy which you were talking about, they could not measure. तो जिस ऊर्जा के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। Okay, if you want to have more on that question, you got the point? Yeah, I got it. The consciousness is not part of matter. This is a misconception. All right, from the beginning on. Life comes from life. You cannot create life. तो जो चेतना है वो शरीर के तत्वों से नहीं आती है, जीवन से जीवन की उत्पत्ति होती है। Now all those elevated scientists, they cannot create one egg. तो ये जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं वो एक अंडा भी नहीं बना सकते।
They have measured the eggs, they know what is inside the egg. Can they make one egg? तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। Can they make one microbe? एक जीव भी नहीं बना सकते। Can they create one cell? एक कोशिका भी नहीं बना सकते। They cannot. वो कुछ नहीं कर सकते। Big scientists, big knowledge. So what is happening as this Kali Yuga progresses? You have the difference between mantra and yantra. तो जिस तरह कलयुग बढ़ रहा आगे, आपको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा, मंत्र और यंत्र। Mantra is subtle, is subtle. तो मंत्र है, ये बहुत सूक्ष्म है। And yantra is gross, is machine. तो जो यंत्र है, ये भौतिक है, मशीन है। So the heavenly planets are full of mantra. तो जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोग, ये सब मंत्र से बने हुए। The lower planets are full of yantra. जो नीचे के लोग हैं, सब यंत्र से बने हुए। As people are doing more and more hellish things, more and more the hellish mentality from the lower planet is coming up. तो जिस तरह लोगों की चेतना नरक की तरफ जाती है, नरक की यांत्रिक मानसिकता आती है। So everything is full of machines now. Anyone that doesn't have a machine? तो सबके पास मशीन है। Anyone doesn't have a cell phone in this कोई room? यहाँ पर है जिसके पास मोबाइल नहीं है? Anyone don't have a mobile, please? One person? एक व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है क्या? Everyone has a phone. Everyone has a machine. सबके पास मशीन है। This machine knows exactly what you are, where you're going, where you come from, what is your number, what are your likes, what are your dislikes. It knows more than you. See, this devotee was just reading about what I said. He was knowing more about me than myself. तो ये सब मशीन के द्वारा, ये मशीन आपके बारे में सब जानता है। आप कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते। इस मशीन के द्वारा, जिस तरह जो प्रभु जी बोल रहे थे, वो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। इस तरह उन्होंने पढ़ के इसे पता कर लिया। All right, Hare Krishna. One more question, or we have enough? हरे कृष्ण। किसी का लास्ट प्रश्न है? माता जी से कुछ लेके कोई? Master is okay. There in the back. Give us a mic. Yes. More louder. My question, I have actually two questions. First one is how to control this anger, especially when you are already hurt. Okay. If somebody has discussed, we just burst out in anger, and after that anger is over, we realize we are in guilt that this is keeping me from progressing in Krishna consciousness. So, how to control this anger? The second question is, what is the difference between sakam karma, nishkam karma, and nishkam karma? तो दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कैसे हम क्रोध को नियंत्रण, विशेष रूप से जब हमें कोई पहले से हम डिस्टर्ब है, उस समय क्रोध आ रहा है, तो तब कैसे हम उसको नियंत्रण करें। So first there's the desire, and if that desire is not fulfilled, then anger arises. तो पहले कोई इच्छा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर क्रोध का जन्म होता है। So the root cause of anger, first of all, is that I want to be the controller. तो क्रोध का जो मूल कारण है, वो ये है कि मैं नियंत्रण करता बनना चाहता हूँ। But the reality is we are not the controller. लेकिन बहुत सारी वजह है कि हम इस तरह कंट्रोलर नहीं बन सकते। Because I didn't choose to take birth here, I don't choose to be in this place here, I didn't choose to die tomorrow, so I'm not the controller. तो मैं कंट्रोलर करता नहीं हूँ। मैंने नहीं सिलेक्ट किया है कि मैं यहाँ जन्म होगा, ये करूँगा, कब मेरी मृत्यु होगी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता अपने जीवन में। So but somehow or another I want to be the controller. लेकिन किसी न किसी तरह मैं कुछ नियंत्रण करना चाहता हूँ। And then if things don't go the way I want them to go, then I try to manipulate it the way, and then if that is not happening, then I make somebody responsible for that is not happening, and I will put my frustration and anger on that person.
तो फिर चीजें जब मेरे हिसाब से नहीं चलती है, मेरे कंट्रोल से बाहर चल जाती है, तो मैं किसी व्यक्ति को पॉइंट करने लगता हूँ कि ये इसके कारण सब कुछ हो रहा है। So basically, we have to work on giving up this Ishvara bhav. तो इसका जो सॉल्यूशन है कि हमें जो ईश्वर भाव, नियंत्रण करना का जो भाव है, इसको छोड़ना होगा। Or you can simply take a little bit anger management. या थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सोच सकते हैं। It's a very complicated thing, that anger, because it is definitely one lust, anger, greed, envy. It's definitely one of the enemies of the living entity, and it definitely arises from passion, and passion is ultimately our enemy. तो लस्ट, ग्रीड, एंगर ये से हमारे शत्रु हैं। रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है और रजोगुण भी हमारा शत्रु है। So as you more progress towards sattva gun, automatically these waves of anger will slowly start fizzling out. तो जैसे जैसे हम हमारा जीवन सत्व गुण की ओर जाएगा, ये क्रोध की तरंगें कम हो जाएगी। What was the second one? Nishkam? I didn't get that. सकाम, निष्काम and भक्ति। What is the difference between three? See, it is today we had said Buddhi yoga means you fully understand. Nishkam, you don't do any work. Sakam, you do the right work. Or bhakti, you do the right work in the right consciousness towards Krishna. See, if you don't do anything, that is not going to help you forced to do something. Let's say, I'm going to the Himalaya, I sit on the sandbank, I stop eating, and I will just sit there. I make that plan. How long I can do that? तो सकाम निष्काम जो है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूँ मैं हिमालय में जाऊँ, मैं वहाँ बैठूँ, ध्यान करूँ, फिर भी वहाँ बैठ के कुछ करना पड़ेगा। Swakama devotees, that are the demigods, they have some desire, but also they want to do the right thing. तो जो सकाम है, जो देवता लोग हैं, सकाम में हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। But this is not fulfilling the ultimate purpose. तो ये वास्तविक पर्पस को सॉल्व नहीं करता है। Because ultimately you are in association of the Lord, you are in association of the devotees, but at the same time you also want to enjoy and you want to have a little bit control. तो इसका अर्थ है कि आप भक्तों की संग में रहना भी चाहते हैं, आप साथ में कुछ अपने लिए भी कुछ फल चाहते हैं, आप कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं। Then when you do bhakti, you maybe do the same activity as A or B, but now see this bhakti, you're doing maybe the same activity. Externally it looks the same way, but you're actually doing it on the instruction perfectly of the Bhagavad Gita or of the spiritual master. तो इसी तरह जब निष्काम का आता है, उस समय भी आप सही एक ही कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य जब आप श्रीमद् भगवद गीता या गुरु वैष्णव के निर्देश के अनुसार कर रहे होंगे। So actually to perform activities in Sudha Bhakti, in pure devotional service, is very difficult because we are not in pure devotional service yet. तो हम क्योंकि शुद्ध भक्ति में नहीं है, तो शुद्ध भक्ति की जो क्रियाएं करना बहुत कठिन हो जाता है। But if we take a spiritual master and he gives us an instruction, लेकिन अगर हमें गुरु का आश्रय लेते हैं, वो हमें कोई उपदेश देते हैं, and we try to follow it to the best of our ability, और हम हमारी क्षमता के अनुसार उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, that devotional service gets channeled and purified through the spiritual master to Krishna, and it becomes pure devotional service. तो ये हमें शुद्ध भक्ति की ओर प्रगति करने में सहायक होती है। This is the only way. यही एक सही विधि है। Swakama or Nishkam, that will ultimately not give the ultimate result, because you will again have to take birth and again you have to come back. सकाम और निष्काम वास्तव Because you still have a desire, you're not getting rid of the root of the desire.
तो उस सकाम निष्काम में भी कुछ इच्छा रहती है, हम उसके कारण तक नहीं पहुंच पाए। Two days back I listened to a lecture by Srila Prabhupada. He explains it very simply. प्रभुपाद का लेक्चर में सुबह सुना था, वो बहुत सही रूप में उसको Just बताया। imagine there's a rich man. He's living in a big house. तो एक अमीर व्यक्ति के बारे में सोचिए, बड़े घर में रहता है, He has lots of money. बहुत पैसा है उसके पास, And then he's hiring a servant. और वो बहुत सारे नौकर रखता है, Now he's paying the servant handsomely. और इस तरह सबको सैलरी दे रहा है। But the servant will always think, if I could sit on this chair, if I could sleep in this bed, if I could eat that food. और नौकर भी सोचता है कि हो सकता है काश मैं भी इस टेबल पे बैठता, इस सोफे पे सोता, इस बेड पे सोता। We are created by the Lord. We are here to, we are meant to serve the Lord. तो हम शरीर में भगवान की सेवा करने के लिए, But we as that servant, we were envious of the Lord, and that's why we have come here. We want to imitate the Lord. तो हम वो सेवक हैं जो भगवान को अनुकरण करना चाहते हैं, भगवान की तरफ भोग करना चाहते हैं। So only if we again becomes a servant, and we will just take the payment the Lord is giving us, and we are wholeheartedly serving the Lord without that tiny tinge of envy, without that desire to be the Lord, then we'll be peaceful, then we don't angry, and then we go back to the spiritual world. तो जब हम पूर्ण शुद्ध भाव से भगवान का सेवा करेंगे, बिना ईर्ष्या के और आनंद की इच्छा के, तो भगवान हमारे को प्रसन्न होंगे। Okay? हरे श्रीमद् भागवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय, ISKCON भोपाल भक्तवृंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, सनातन जी की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी का बहुत